Welcome to MB classes. So it is a time to learn English, or you can say that how to speak in English, how to converse in English with your friends, with your family members, and with unknown person. So the today's topic is in this particular class, this is class 3, and what's the time? आज का topic है क्या time हुआ है? If you want to ask this particular question that what's the time, then how you will ask this particular question, and if someone asks you the question that what's the time, then how will you reply the answer of this particular question? And today we are going to discuss about this particular thing. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि अगर मुझसे कोई पर्सन मिलता है तो वो मुझे पूछता है टाइम क्या हुआ है, तो मैं कैसे उसका रिप्लाई दूंगी इन इंग्लिश, या फिर अगर मुझे किसी से कोई टाइम पूछना है कि अब क्या टाइम हुआ है, देन हाउ आई कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट व्हाट्स द टाइम. तो दैट वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास. आज हम यही पढ़ेंगे. ओके, तो टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हुआ है. Now the time is 12:15. What's the time? 12:15. This is a simple way. Okay, so just you have to watch out the hour hand and the minute hand, then you can tell the time. आप आर हैंड और मिनट हैंड को देखोगे, आप बता दो क्या टाइम हुआ. दिस इज नाउ दिस इज 12:15. अब 12:15 हुआ है, यू जस्ट टेल. बट दिस इज नॉट अ फॉर्मल वे, और ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं है या फिर कोई राइट तरीका नहीं है. देन हाउ टू टेल द टाइम, कैसे तरीका है, कौन सा मेथड है दैट वी यूज्ड. These are two ways. The first is minute plus past plus r, means minute then past then r. Past is the word that you have to use, and minutes means what the minute is going on and what the r is that. For example, if in the watch there is 8:10, so how will you convert? Then 10 past 8, 10 बजकर 8 मिनट. क्या होता है, मैंने इसका मतलब 10 बजकर 8 मिनट. 8 10 का मतलब क्या होता है, 10 बजकर. पास मीन्स बज चुके हैं, 10 मिनट पहले 8 बज चुके थे. तो दिस इज 10 past 8. मीन्स क्या हुआ, 8 बजकर 10 मिनट का मतलब क्या हुआ, 8 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं. तो 10 past 8, 10 मिनट्स पहले 8 आवर्स हुए थे, 8 टाइम हुआ था. तो हाउ टू कन्वर्ट इन द यूजिंग अ पास्ट, दैट 8:10 को कैसे बोलोगे, 10 past 8. समटाइम्स यू हैव टू यूज 7. इफ यू वांट टू टेल द 7:15, तो कैसे बोलोगे 15 past 7. और यू हैव टू टेल द 11:45, तो कैसे बोलोगे 45 past 11. नाउ इफ यू हैव टू टेल, और अगर मीन्स दूसरा तरीका क्या है, टेल 12 past 20. तो व्हाट्स द टाइम, 12:20, 20 past 12, 20 past 12. नाउ द सेकंड वे इज मिनट प्लस 2 प्लस आर. तो कैसे बोलोगे आप, इट्स 7:50. तो कैसे बोलोगे 10 to 8, 10 बजने में 8 मिनट हैं. 7:50 को कैसे बोलोगे 10 to 8, 10 बजने में 8 मिनट हैं. एंड इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेल द टाइमिंग ऑफ द 11:40. तो वैसे बोलोगे 20 to 12. जस्ट यू हैव टू माइनस 60 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनट्स, एंड देन यू विल टेल द टाइम 20 to 12. ओके, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन टेल द टाइम. इस तरीके से आप टाइम बता सकते हैं. दिस इज द बेसिक रूल. ये तो बेसिक रूल था. अब कुछ की पॉइंट्स है दैट वी हैव टू डिस्कस. नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग द की पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द की पॉइंट इज 15 मिनट्स. If you are using the word 15 minutes, so instead of 15 minutes you can use quarter. What do you use, quarter. If you have to convey the message of 30 minutes, then what you will use, half. What you will use, half. If exactly the time the 12 o'clock at night, then you what we will use 12 a.m. night में हुआ है, at that time the new day was start, that's why am 12 a.m. If it is in the noon, means afternoon start हो चुकी है, तो you will use pm. 12 o'clock at noon means 12 p.m. At night 12 a.m. At noon 12 p.m. 12 midnight, 12 midnight से 12 noon, that is approximately am. 12 midnight से 12 noon का अगर आपको टाइम बताना, तो what it is mean, it means am. Am is anti-maridum. 12 midnight to 12 noon, it means am. Am means anti-maridum. Next is 12 noon to 12 midnight. 12 noon से 12 midnight तक PM होता है. And what it means, post-maridum. Post-maridum. 12 noon to 12 midnight is PM and it means post-maridum. Now, how we will tell the time? कैसे बताओगे आप time? Suppose what the time is right here, that is 12:15. क्या time हुआ है 12:15. So how will you tell? एक तरीका तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. वन वे इज आई ऑलरेडी टेल यू, दैट इज 15 past 12. 15 past 12. And the second way is using a 15 minutes you can tell the quarter.
quarter past 12. How you will tell? Quarter past 12. 12 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं. It means quarter means सवा. सवा 12 हो चुके हैं. तो quarter past 12. Now what's the time? अब क्या time हुआ है? Now it is 11:45. अब क्या time हुआ है? 11:45. Then how we will tell? 15 to 12. कैसे बोलोगे आप इसे? 15 to 12. Now how we will tell in the another way, that is quarter to 12. Quarter to 12. यहाँ पे 45 है, that's why we will use quarter to. And if it is 15, then you will use that you will use quarter past. 15 के लिए quarter past and 45 के लिए quarter to. For 15 you will use quarter past, and for 45 you will use quarter to. In next is what's the time? That is 12:30. And how will you tell? That is 30 past 12. 30 past 12, or you can say that half past 12. How will you use? Half past 12. In this way you can use these particular words, that is quarter and the half. Now what's the time? That is 12 o'clock. What's the time? 12 o'clock. Now the next topic that we are going to discuss in our next class, that is the punctuation marks. First of all, you have to know the meaning of the punctuation mark. While reading or speaking a sentence, is mandatory to have information about where should we take a pause or where to be stopped. If you are speaking to someone else, then if you are reading something, then you have to tell to the listener that where is pause or where is a need to full stop. For example, right now I'm conversing with you. So it is mandatory that you can understand where the my sentences stop, where the I have to give the stress, or where I have to use the commas. According to these particular things, you will put the punctuation mark. अब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो अब बात करते हुए आपको समझ में आना चाहिए मुझे कहाँ पर पॉज लेना है, मुझे कहाँ पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट होना है. वो कैसे बताऊंगी? पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली रीड करके. यू हैव टू नो दैट हाउ टू रीड अ पंक्चुएशन मार्क. आपको पता होना चाहिए कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को रीड किया जाता है. तो फॉर दैट वी मस्ट नो अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स. कौन कौन से हैं? व्हाट आर द पंक्चुएशन मार्क्स? द फर्स्ट इज द फुल स्टॉप. Full stop means पूर्ण विराम, that you have to take a long pause. Next is a comma. Comma means अल्प विराम, that there should you take a small pause. What you have to take a small pause. Next is a question mark. Means you are asking some question, then you put your question mark. The accent will be changed in the case of full stop and in the question mark. And the expression is also got to change. Next is the exclamation mark, where you have to express your feelings. Where you have to express the feelings, what you will use? You will use exclamation mark. So means in your words, in your speaking, in your conversation, you are excited or you are feeling a sorrow, whatever you are feeling, it must be shown in your speaking. Next is the apostrophe. Apostrophe means you are using the short forms. So in this way, these are the punctuation marks. In detailing where we have to put which punctuation mark, we will discuss in our next class. I hope you are learning English, how to speak in English. If there is any problem while speaking English, you can comment. Thank you.